Good morning, student. Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmic Green School, Thareshwar Bharuch. My name is Swati Sharma, and it's class 9 Maths, and our chapter is probability. So, student, in this chapter, we learn in our daily life. In our daily life, we come across some statement having word chance, doubt, probably, most probably, etc. Okay, we always use it is chance to having something, or I have a doubt, and probably it will be happen, or so on. Okay, so there and we know there is 50% chance of Anil to crack the annual exam. I doubt that he will pass the test, or most probably it will rain today. Okay, in all the above statement, the word chance, doubt, most probably, etc. are involved in an element of uncertainty. Means it's not हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये चीज़ होने ही वाली है. It's uncertainty. Here is statement. Here is statement first. 50% chance it may or may not Anil crack the annual exam. Means हो भी सकता है and it's not happen also. Okay. Now we are predicting 50% chance of Anil to crack the annual exam. हम क्या कर रहे हैं? प्रिडिक्ट कर रहे हैं. Which based on his seriousness toward his study and hard work. वो किस पर डिपेंड करता है? उसकी स्टडी पर और हार्ड वर्क पर. सिमिलरली इन द अदर केस द अनसर्टनिटी कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली बाय मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी. In this chapter, we will study the concept of probability as a measure of certainty or uncertainty. Okay, certainty and uncertainty पर हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? आगे स्टडी करेंगे. ओके, अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी? इज द स्टडी ऑफ अ चांस ऑफ इवेंट हैपनिंग. For understanding the concept of probability, we have to know the some basic term related to it. Of basic terms, which basic term? First of all, experiment or trial. An operation which can produce some well-defined outcome is called an experiment or trial. Okay, means जो हम operations करते हैं, suppose we have to throw a dice. इफ़ यू वॉन्ट टू थ्रो अ डाइस, तो जब तक वो डाइस थ्रो होकर के आपको कोई नंबर नहीं दे देता, तब तक अनसर्टनिटी है कि उस डाइस पर टोटल 1 to 6 नंबर्स हैं, उसमें से कौन सा नंबर आएगा. ओके, सो हम बोल सकते हैं चांस टू कम 2, चांस टू कम 4, चांस टू कम 6, बट इट्स नॉट कन्फर्म. ओके, अंडरस्टैंड. दैट इज अ कॉइन इज टॉस्ड. अगर आप कॉइन को टॉस करते हैं 20 टाइम, देन ईच टॉस इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट. सो हम हर एक टॉस को क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट कहेंगे, और अ ट्रायल. एंड वी गेट आइदर हेड और टेल एज अ रिजल्ट. हम हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. हियर हेड एंड टेल आर कॉल्ड आउटकम्स. जो भी आपको मिल रहा है डेट इज आउटकम्स, और जो आप कर रहे हैं डेट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ द एक्सपेरिमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स विच आर गिवन बिलो. 2 टाइप्स हम एक्सपेरिमेंट को डिवाइड कर सकते हैं, डेट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड first of all, random experiment. What is random experiment? An experiment when repeated under initial identical condition do not produce the same outcome every time, but the outcome produced is one out of the several possible outcomes, is known as random or probabilistic experiment. Means हम क्या बोल रहे हैं? An experiment when repeated under identical condition do not produce the same outcomes every time, but the outcomes produced is one out of the several possible outcomes, is known as the random or probabilistic experiment. Example, tossing a fair coin is a random experiment because if we toss a coin, when either a head or tail will come up. But if a toss a coin again and again, अगर हम वो coin को again and again toss करेंगे, then the outcome each time will not be same, but it will be
श्योर बी आइदर हेड और आइदर टेल। सी, हम अगर उसे 20 टाइम भी अगर हम उसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, सो व्हाट विल बी कम, हम जितनी बार भी उसे टॉस करेंगे तो हमें श्योर है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा कोई उसमें आ नहीं सकता, बिकॉज इन अ क्वाइन देयर आर टू फेसेस, वन इज हेड एंड अनदर इज टेल। ओके, अंडरस्टैंड? सो दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। हम उसे क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। सो द सेकेंड इज deterministic experiment, an experiment when repeated under identical condition produce the same result or outcome is known as deterministic experiment. Example, tossing an unfair coin having either tail or head on both sides 20 times, we get the same result. if अगर unfair है मीन्स एक जो कॉइन है उसके दोनों साइड अगर हेड है, सो आप जब भी उसे टॉस करेंगे तो आपका हेड ही आएगा। ओके, और अगर दोनों साइड टेल है, अगर आप जब भी टॉस करेंगे तो टेल ही आएगा। ओके, अ पॉसिबल आउटकम और कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। हम इवेंट किसे कहते हैं? सी, डिटर्मिनिस्टिक मीन्स जो हमें पता है, अगर हम हमारे कॉइन के बोथ द फेसेस हैविंग हेड और having both the faces having tail, so we know that when we toss the coin we get head, अगर हमारे पास हेड है दोनों फेस पर तो। ओके, सो डेट इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ इवेंट, व्हाट इज इवेंट? अ पॉसिबल आउटकम और कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। Possible outcomes or combination of outcomes is called an event. Example, getting head in the toss of a coin in an event is an event. Okay, जब हम टॉस करते हैं और अगर हेड आता है तो हम उसे बोलेंगे that is event. Occurrence of an event E associated to a random experiment is said to be occur or happen in a trial. अब सपोज आपने कॉइन को टॉस किया, सो क्या हुआ? जब आप उसे टॉस कर रहे हैं, ओके, और जो आपको मिल रहा है, ओके, आपको जो मिल रहा है, एन इवेंट ई एसोसिएट टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज सेड टू बी ऑकर और हैपन इन अ ट्रायल इफ द आउटकम ऑफ ट्रायल इज वन ऑफ द आउटकम डेट फेवर ई। अगर हमें जो चाहिए वही आया है, सो वी कैन से दैट हम क्या बोल रहे हैं? That is our favorable outcomes. Okay, if a die is rolled and the outcomes of a trial is 4, then we say that each of the following event has happened or occurred. हमने जब एक डाइस को रोल आउट किया, थ्रो किया डाइस को और 4 आ गया, then we say that each of the following event has happened. Getting an even number, हम उसमें ऐसा बोल सकते हैं because 4 is a even number. Getting a number greater than 2 से greater है, getting a number less than 5. Okay, and you can say that getting a number equal to or greater less than 4. Okay, now elementary event. What is elementary event? An event having only one outcome of the random experiment is called an elementary event. Example, in tossing of a coin, the possible outcomes are head or tail. Okay, there are only 2 outcomes, that is head or tail. Therefore, if we define even, हमने अगर 2 outcomes लिए, first is even, हमने 2 event बोले, even हमारा क्या हुआ? and E2 are elementary event associated with the random experiment of tossing the coin. मीन्स या तो even होगा, अदरवाइज E2 होगा। ओके, हमारे पास में जब कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास ओनली 2 आउटकम्स आते हैं, आइदर हेड और आइदर टेल। ओके, अंडरस्टैंड? सो देट आर कॉल्ड एलिमेंट्री, मीन्स हमें पता है कि इन दोनों के अलावा और कुछ आने वाला नहीं है। अंडरस्टैंड? Okay, now compound event. What do you mean by compound event? A collection of 2 or more elementary event associated with a random experiment is called a compound event. Suppose, in example, in the random experiment of tossing of 2 coin simultaneously, अगर आपने एक कॉइन की जगह पर 2 कॉइन को साथ में टॉस किया, if we define
that event getting exactly one head, then it is a collection of elementary event. ओके, सपोज हम बोल रहे हैं दोनों ही हेड आए या किसी एक पर हेड आए. ओके, हम क्या बोल रहे हैं, इफ वी डिफाइन द इवेंट गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, सो व्हेन वी टॉस टू कॉइन, सो द पॉसिबिलिटी इज गेटिंग हेड हेड, हेड टेल, या तो फर्स्ट वाले में टेल आएगा, सेकेंड वाले में हेड आएगा, और या तो दोनों में टेल आएंगे. ओके, सो खाली एक में अगर हमें हेड चाहिए तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं. सो इट इज़ अ कंपाउंड इवेंट. ओके, अंडरस्टैंड. रैंडम टॉस is a phase, which means that the coin is allowed to fall freely without any base or interference. ओके, मीन्स आपने कोई चीटिंग नहीं करी है. आपने जब उसको कॉइन को टॉस किया है, थ्रो किया है, सो वो अपना रैंडमली हमें आंसर देगा. ओके, अ कॉइन has two side, head and tail, and a dice having 6 faces, that is 1 2 3 4 5 6. समटाइम डॉट अपेयर इन प्लेस ऑफ अ नंबर. जो डाइस होते हैं उस पर नंबर की जगह पर क्या लिखा होता है, डॉट्स डले होते हैं. ओके, अंडरस्टैंड. सो स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट probability. Okay, so in everyday life we come across statements such as it may rain today, probably Arvind will top and board exam this year, I doubt she will pass the test, it is unlikely that India will win the cricket world cup. Okay, so chances are high that the price of petrol will go up. The word may, probably, doubt, unlikely, chance used in the above statement indicate uncertainty. For example, in the statement may rain today means it may rain or may not rain today. Okay, we are predicting rain today based on our past experience when it rained under similar condition. Okay, similarly prediction are made in other case listed in जो हमने आगे के पढ़े थे, जैसे आई डाउट डेट हैव विल पास द टेस्ट, मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टेन फर्स्ट द एनुअल एग्जामिनेशन. ओके, सो देट आर अनसर्टेनिटी, मीन्स इट्स नॉट श्योर कि ये होगा ही, बट इट मे बी और इट मे नॉट बी. ओके, probability is a measure of uncertainty. The concept of probability developed as a result of studied of game of chance or gambling. Suppose you pay ₹5 to draw a card out of pack of 52 card. Okay, if you get an 8 you get ₹25, otherwise you get nothing. Should you play such a game? Does it give a fair chance of winning, or are you going to lose in the long run? Search for mathematical answer of this type of question lead to the development of the modern theory of probability. Italian mathematician Jerome Cardon, French mathematician Blaise Pascal and Pierre de Fermat, Swiss mathematician James Bernoulli, and Russian mathematician Kolmogorov were pioneers in this study. Pierre Simon Laplace wrote, "It is remarkable that a science which began with the consideration of game of chance should be elevated to the rank of most important subject of human knowledge. Today, probability is used extensively in the field of physical science, commerce, biology science, medical science, weather forecasting, etc." Okay, now some other word we used in this chapter, that is trial. Okay, before we use probability, first is a trial. A trial is an action which result in one or several outcome. For example, if we toss a coin, it is a trial. The possible outcome are head or tail. Okay, if we toss a coin 10 times, then these are 10 trials. Okay, if we throw a dice, it is a trial.
the possible outcome are the number 1, 2, 3, 4, 5 or 6. Okay, if we throw a die 15 times, then these are 15 trials. Okay, understand? Similarly, if we toss two coins simultaneously, it is a trial, or the possible outcome are two head, one head or no head. Okay, or possible outcome you can say that maybe taken two tail, one tail or one no tail, or the possible outcome may be taken as two head, one head or one tail or two tail. Okay, if we toss two coins simultaneously 20 times, these are total 20 trials. Okay, understand? Now what do you mean by experiment? An action which result in some outcome is called an experiment. Okay, for example, tossing a coin once or tossing a coin 10 times, it's an experiment. Okay, throwing a dice once or throwing a dice 15 times or 20 times. Okay, throwing a coin simultaneously one or throwing a two coins simultaneously 20 times, all these are experiment. Okay, now what do you mean by event? The collection of some outcomes of an experiment is called an event of the experiment. Okay, so we can say that it's an experiment. Okay, so what is event? The collection of some outcome of an experiment is called an event of the outcomes. For example, when a die is thrown, the six outcomes are the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, then getting a 6 and getting an even number. Okay, so see here in a dice there are only three even numbers, that is 2, 4 and 6, and three odd numbers also, that is 1, 3 and 5. Okay, so occurrence of an event means हम क्या बोल रहे हैं, हमें जो चाहिए that is our outcomes. Okay, that is our favorable outcomes. Okay, when the outcomes of an experiment satisfy the condition mentioned in a event, then we say that event has occurred or happened. Okay, suppose for example in the experiment of tossing a coin, an event E may be getting a head. If the coin come up with head, we say that event E has occurred. Otherwise, if the coin comes up with tail, we say that event E has not occurred. Okay, understand? Similarly, we can say that if the experiment of tossing a pair of coins simultaneously, an event E may be getting two heads. If the pair of two coins come up with two heads, we say that the event is occurred. Okay, and if not getting two heads, then we can say that it event does not having occurred. Okay, in the experiment of throwing a dice, an event E may be getting an even number if the dice come up with any of the number 2, 4, 6. We say that event E has occurred. Otherwise अगर हमें 1, 3 and 5 मिला तो हम बोलेंगे event does not having occur. Okay, understand? So for convenience, by the word event E, we will mean that event E has occurred or happened. Okay, understand? So this way we can say कि हमने क्या पढ़ा इस पूरे की अभी probability. What is the probability? Probability is the chance. Okay, it is uncertainty, not a sure event, but it is uncertainty. And we also learn total related terms. Suppose basic terms: experiment or trial, random experiment, and deterministic experiment, event, occurrence of an event, elementary event, compound event. We learned that, okay, in this chapter. Okay, understand? So you have to learn these terms, okay, properly, because this term is very important in this chapter. Okay, student, understand? So what we can say, probability and experiment approach. So when we talk about probability of an experiment, so if E is an event, that happen when an experiment is performed, then the experiment or
empirical probability, we can say that of an event E is given by, what is the formula for this event? So number of trial in which the event E happen upon total number of trials. ओके, सपोज आपको जो इवेंट चाहिए था, सपोज इफ़ यू टॉस अ कॉइन, ओके, नंबर ऑफ टाइम्स, अगर आपको आप टॉस कर रहे हैं कॉइन को और आपको हेड चाहिए, सो हेड कितनी बार आया, सो नंबर ऑफ टाइम्स अ हेड कम अप अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम यू कैन टॉस। ओके, आपने टॉस कितनी बार किया है वो अपॉन में आएगा। ओके, और इफ़ यू वांट टू टेल, सो what is the formula? Number of time a tails come up upon total number of times the coin is tossed. Okay, understand? So toss the coin 20 times and in the same way record your observation as above. आपको इन फॉर्मूले से क्या करना है, आपको अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है। ओके, 20 और 30 टाइम। ओके, अंडरस्टैंड, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन गिवन अबव फॉर दिस कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टॉस एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ head and tail and then find the value of the corresponding fractions. Okay, understand? So this way you can find the value of probability of the given event. Okay, you can see the second activity also. See the activity, read it carefully and do it by yourself. Okay, understand? See, throw a die 20 times and note down the number of time the number will occur. ओके, 1 2 3 आपको कितनी कितनी बार मिला आपको वो लिखना है। ओके, अंडरस्टैंड? सो कंप्लीट दीज एक्टिविटीज़। ओके, हैव अ गुड डे।